हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आम प्रीवियस जो सेशन रे देखिले बॉटनी रो प्रीवियस ईयर एसएसबी डिजिटल केमती कोन सब क्वेश्चन आसीथिला को टॉपिक ऊपर माने बेसी फोकस करा होतला। ठीक अछि, एबे हम देखिबा जूलॉजी पार्ट। तो 74 क्वेश्चन जे हम जाइतला 75 रो कंटिन्यू करबा। ठीक अछि, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लोरेला एंड क्लामाइडोमोनास fall under which kingdom from the options? algae रे ना तमरो प्लांटी रे ना प्रोनिरा रे ना प्रोटिस्टा रे। ठीक अछि, जदि हमें क्लामाइडोमोनास आ क्लोरेला को देखुचे देन से माने कोन तांको क्राइटेरिया रहउची से माने हेले यूनिसेलुलर ने सिंगल सेल स्ट्रक्चर तांको बॉडी रे रहउची। ठीक अछि, किंतु तांको टाइप ऑफ सेल देखले से होजंती यूकैरियोटिक, तमाने यूकैरिया डोमेन को से बिलोंग करंती। जदि हमें ए दीटा कैरेक्टर को सैटिस्फाई करता देखिबा ताले से के हबो ना हमर किंगडम प्रोटिस्टा। सो द आंसर was D, किंगडम प्रोटिस्टा। Then which phylum is first to show cephalization? अच्छा, cephalization माने कोन ना हेड, देन तमरो कोन न्यूरो ट्रांसमीटर सिस्टम, देन तमरो कोन ना सब सेंसरी ऑर्गन। ये सबू एका संगरे गोटे जगह रे तमरो कोन होतनी अरेंज हेइकिना ताको हेड हिसाब रे यदि कैटेगराइज करा होची सेही जिनसडा को एनिमल रे फर्स्ट देखाइला को फाइलम रे फर्स्ट देखाइला ताको कहू सेपरेटाइजेशन। ठीक अछि, हां ए जगह पे मतलब कि कंफ्यूजन रहिबो। देखो, जदि हमें प्रकृत जहाँ टू द पॉइंट रही छि लाइन सेही हिसाब रे आंसर को जिबा तो आंसर आसवा कथा प्लैटीहेल्मिंथेस। ठीक अछि, काहे के ना हमें अभी फाइलम हिसाब देखते आगो प्लैटीहेल्मिंथेस आसी आनेलिडा सिलेंट्रेटा सॉरी मोलस्का ए पनो गला को अके डेवलप्ड फाइलम से मन रहउछंती। तो सेफालाइजेशन एठी प्लैटीहेल्मिंथेस रे अछि आनेलिडा रे अछि, पर प्लैटीहेल्मिंथेस जदि फास्ट कहबा से हिसाब रे प्लैटीहेल्मिंथेस सब आंसर। किंतु जदि हमें कहतो डिस्टिंक्ट और प्रॉपर हबो देन सी हबो आंसर आनेलिडा। ठीक अछि, जोड़ा को हमें कहै कोन रूडिमेंटरी cephalization in case of annelida, very particular cephalization for distinct माने क्लियर जना पड़ जिवो। बट प्लैटीहेल्मिंथेस रे कोन ना सेटा जो कोन से क्लियर न था। ठीक है, गोटे रफ टाइप रे तमर cephalization हे जे, बट हम क्वेश्चन डायरेक्ट दे छि कोन फर्स्ट सो cephalization तो प्लैटीहेल्मिंथेस सब आंसर। बहुत टाइम एमती हुए हमें किसी गोटे को आंसर आम लॉजिक हिसाब रे कंसीडर करूछु, बट आंसर की आसला को स्टार टिके डिफरेंट वे और कि अलग चेंज होबी जो तंकर गोटे लॉजिक माने पकांती हमें आम लॉजिक हिसाब रे चलथौ तो सेंते किछि हुए। बट एक केस हमें जे एग्जैक्टली क्वेश्चन को बेस करके जिबा आंसर हबा कथा प्लैटीहेल्मिंथेस। से पचाने कहार डिस्टिंक्ट अछि कहार नाही से विषय पचाने से पचाछि कि एग्जैक्टली फास्ट सेफालिजन को फाइलम रे देखा जायतला, तो दैट इज द आंसर ऑफ प्लैटीहेल्मिंथेस। A segment of DNA has 250 thiamine and 250 guanine. The segment of DNA माने कोन DNA जेहेतु से निहाते डबल स्टैंडर्ड DNA रहइबो, डीटा स्टैंड तर थिबो कॉम्प्लीमेंटरी स्टैंड गोटे 5' to 3' 3' to 5'। ठीक अछि, तो से हेतरे कहले कोन ना 250 थायमिन अछि। यदि 250 थायमिन अछि से एपट सेपट मिसी कि थाउ कि गोटे सिंगल लाइन रो थाउ ताको कॉम्प्लीमेंटरी से करिकि जे डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो डेफिनेटली 250 कोन तो एडेनाइन भी थिबो। ओके, 250 एडेनाइन थिबो, देन रहला तमर कोन ना 250 गुआनाइन भी अछि, तो एक्जेक्टली 250 साइटोसाइन भी थिबो। ठीक अछि, the total number of nucleotides present in the segment, तो एबे कहला कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड माने कोन जो एडेनाइन थायमिन गुआनाइन साइटोसाइन ए सब कोन न्यूक्लियोटाइड कि माने हेले नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है,
तापर नाइट्रोजन बेसेस सहित जदि आमर अटैच है किए ना सुगर ग्रुप तो सी हो गला कौन न्यूक्लियोसाइड यदि ता सहित अटैच हो गला फॉस्फेट ग्रुप then सेटा हो गला न्यूक्लियोटाइड ठीक अछि आ ए बाइंडिंग ता each and every न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेसेस सहित हम न्यूक्लियोटाइड प्रिपेयर करिए ठीक अछि ए दि जण बांधी हे गले पेयरिंग हे गले ताको न्यूक्लियोटाइड करबा नै तार जंक्शन टाइप तमरा हे गला ठीक अछि बट तमरा गोटे सिंगल तर नाइट्रोजन बेसेस सुगर आउ फॉस्फेट ग्रुप आटकले ताको हम न्यूक्लियोटाइड कहू सो जदि एठी नाइट्रोजन बेसेस हमर केतरा अछि 250 into 4 पहला 1000 तो डेफिनेटली न्यूक्लियोटाइड भी फॉर्मेशन हे परिबो 1000 बहु जण को पेयर करके कैलकुलेट करले आंसर 500 दे देबे बट एक्चुअल आंसर विल बी सी दैट इज 1000 okay the small subunit of 70s are ribosome is comprised of what 70s ribosome रो combination कौन रोचे ना 50s plus 30s so definitely it is 50s of a large unit it is 30s of a small unit ठीक अछि and तमर जो सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट 30s ता मतलब तमर केतरा सब स्मॉल सब यूनिट अछि तो आज कोन आरआरएनए अछि हां एतो तो सब आरआरएनए ही कहै छै ना टोटल अछि 16s are RNA okay so the answer will be B okay next question 79 complete linkage is observed in dash complete linkage और तुम जो कह कोन इनहेरिटेंस को ऑर्गेनिज्म या भीतर देखा जाय छै मेल ड्रोसोफिला फीमेल ड्रोसोफिला बर्ड्स और लिजर्ड आंसर अब ए मेल ड्रोसोफिला काहे कि ना एथे नो क्रॉसिंग ओवर माने जीन और जीन भीतर कोन जो कोन इंटरबाइंडिंग ए सब हेइनी ला तो जेमिति थिबे से सेमिति ही इनहेरिट हेकी आसीबे सेतिबे ताको कंप्लीट लिंकेज बोली कहै छै A cruciform structure of chromosome during meiosis is a characteristic feature of dash. What? Cruciform structure मान जेतबे तमर रहउची कोन ना लूप फॉर्मेशन होची जेमति कि तुम गोटे टीआरएनए देखितो स्ट्रक्चर इनके लूप फॉर्मेशन नै किथिबो किछ हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर इस हम पढ़ितले ठीक ना से जो लूप फॉर्मेशन एटी हला एटी गोटे लूप सब फॉर्मेशन हला सेई जगह रे कोन होउछ ना तमर न्यूक्लियोटाइड मानकर सब सिनेप्सिस फॉर्म होउछ हला एंड से सिनेप्सिस का कोथि रहउछ ना मेयोसिस प्रोसेस रे होउछ सेतबेले कि तमर ए जो इन्वर्टेड वाला सब जो कोन न्यूक्लियोटाइड ए नॉर्मल मानक सहित पेयर हबा को ट्राई करंती हला सेई जिंस होउछ तमर कोन ना मेयोसिस रे प्रॉब्लम हो और इन्वर्जन होउछ तो सेई प्रोसेस तमर कोन हला ना इन्वर्जन ओके तो आंसर हबो बी तो इन्वर्जन ही लूप फॉर्मेशन कराए कि तांको भितरे कोन करे ना पेयरिंग फॉर्मेशन हवा स्टार्ट कर दे when two mutants having the same phenotype were crossed the progeny obtained showed a wild type phenotype thus the mutations are what ना तो सपोज देखो देछि कोन ना टू म्यूटेंट माने कोन डेफिनेटली कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर थिबो ठीक अछि ए मु जदि तांको क्रॉस करली
ये होची हमर आउटकम आसला ठीक अछि कोथि आसला ना हमर ये हला f1 ये हला f2 देन आसला हमर f3 केस रे कोन हो जदि मु माने कोन गोटे एमती पेरेंट टाइप रो थिबो तुमरो स्ट्रक्चर आ गोटे तुमरो कोन ना तुमरो प्रोजेनी टाइप रो स्ट्रक्चर जदि फॉर्म होला having the same phenotype were crossed the progeny ହେଲା तीटा phenotype अछि ये गोटे progeny माने progeny गोटे जो कोन डिफरेंट progeny ये रहला तास यदि क्रॉस होला तो कोन होबो रिजल्ट या से तो ये बाइंड हले देन यास तो सेकंड टा एपटर भी सेम जिंस देन लास्ट से तो चारटा नंबर फॉर्मूला जे कि तुम कोन f3 जनरेशन रे आछि होला तो एठी तमरो देखो 50% केस चांसेस कोन होछि ना गोटे डिफरेंट कंप्लीटली पेरेंट्स रो डिफरेंट वाइल्ड टाइप जनरेट हो जाउछि फेनोटाइप ओके तो एटा केस माने को टाइप रो कंडीशन कहा होछि म्यूटेशन आर नॉन एलिलिक नॉन एलिलिक केतेबेले हबो जेतेबेले सेम फेनोटाइप और तुम कहि परिबो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थिबो किंतु क्रोमोसोम रो डिफरेंट लोकेशन रे प्रेजेंट थिबो एलिलिस हला सेटा भी गोटे सिंगल जीन सेम फेनोटाइप सिंगल जीन गोटे क्रोमोसोम गोटे सेगमेंट बट डीटा डिफरेंट लोकेशन रे यदि एलिली प्रेजेंट थिबो एटा होची नॉन एलिलिक टाइप ऑफ म्यूटेशन सो द आंसर हबो बी Then who wrote the book Evolution, The Modern Synthesis? Answer about G.L. Steben, The Modern Synthesis. How लिखा केबे ना 1942. Okay. तार भीतर कौन इंक्लूड चला ना Darwinism, Evolution and तुम्हारा Genetics. जेनेटिक्स की ये इवोल्यूशन को इवॉल्व करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू व्हाट जेनेटिक ड्रिफ्ट माने कौन रोचे जोटा कि रैंडम चेंजेस और तुम कह परिबो फ्लक्चुएशन इन एलिलीज फ्रीक्वेंसीज और तुम कह परिबो क्वांटिटीज है सेटा भी केते बळे जदि तमे गोटे नॉन स्मॉल पॉपुलेशन अंडर रे कंसीडर करछ हठात थी सडन गोटे कौन चेंज हो किसी भी गोटे बाय फोर्स तुम किसी गोटे प्रॉब्लम जो सडन कौन गोटे चेंज हो भाविन गोटे एक्स टाइप रो सेम स्पेसीस रो एक्स टाइप अच्छे वाई टाइप अच्छे सपोज किसी गोटे इन्फेक्टेड है एक्स टाइप तुम माने कौन लोप पाईगले डिस्टिंक्ट हो गले तो खाली वाई रहीगले तो ड्रिफ्ट हो गला ना एक्स टाइप रो तुम जो जहाँ भी कलर अलग थी टिके कौन डिफरेंस से टाइप रो ऑर्गेनिज्म तुम आ पाइबनी तो ये गोटे रैंडम सडन ही चेंज है तो ये कौन वाई टाइप ओनली पाइल तो सेटा तुम कौन कराउछि नेचुरल सिलेक्शन थ्रू रे होछि कि तमने किछि गोटे कैलामिटी कि किछि गोटे माने फूड अभाव हो कि किछि वेदर कंडीशन चेंज हो किछि डिजीज हो होछि से जगह रे जे सर्वाइव करि पला से ही तुम सर्वाइव करछि माने कोन आगु को बढ़ी परछि और तुमरो सर्वाइवल फिट ही परछि सेटा नहे नॉन रैंडम मेटिंग माने यदि कहा भी सहित मेटिंग है कि रिजल्ट से आउछि कि सेटा भी नहे आर्टिफिशियल सिलेक्शन से भी नहे तो आंसर हम कौन ना रैंडम चेंज कारण हठात कि चेंजेस हम एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट हो अपार्ट हो सेपरेशन हो और हम लोप पाई सो द आंसर विल बी ए स्पीशीज डाइवर्सिटी विदिन a living community is known as what alpha beta gamma और जेनेटिक डाइवर्सिटी अच्छा जेनेटिक डाइवर्सिटी जो टिक मारिछि जो घाट भी क्वेश्चन आछे केमिति ही परबा जेनेटिक तो हमर गोटे जीन ये हे गला ना ना से तो केबे भी सेंति हे परिबनी कि जो कोन गोटे पर्टिकुलर छोटो पॉपुलेशन भितरे
एटी स्पेसीज पचार स्पेसीज माने पूरा पर्टिकुलर लेवल को आसी गोटे अति माने पूरा सिमिलर टाइप ऑर्गेनिज्म थे छोट कम्युनिटी रे से लेवल को पड़े आसलानी ठीक अच्छे। तो जदि आम देखुचे अल्फा अल्फा माने कौन विद इन ए कम्युनिटी अल्फा बीटा एमती सिम्बलाइज रे एटा लिखा हुए नाही मु जस्ट शॉर्ट रे लिखुची सिमिलर तुमको मतलब इजी हो मतलब टाइम कम टाइम रे कवर हो परिबो बोली आउ जो किंतु जतबे ए सब थ्योरी पार्ट जिनस लिखा जाय ना एटा अल्फा बीटा स्पेलिंग केता लिखा जाय ए सिंबल केतबेले यूज करे त सब फार्मूला प्रॉब्लम ए सब यूज करछो और तो डिनोट करछो का कोड से ही यूज करा जाय। देन तमर बीटा हला कोन ना बिटवीन कम्युनिटी देन गामा हला कोन तो कोन अक्रॉस लैंडस्केप ठीक है एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी होची इन ए जीन पूल में गोटे पर्टिकुलर सोसाइटी और कॉलोनी में सब प्रकार वेराइटी ऑर्गेनिज्म थे ता भितर डाइवर्सिटी जोटा को एटा जीन पूल कहउची एटा तो पछे कोन स्पीशीज डाइवर्सिटी गोटे पर्टिकुलर स्पीशीज आ गोटे पर्टिकुलर कम्युनिटी भितर तो सेटा कोन होबो तमरो विद इन ए कम्युनिटी जेतो आसी अल्फा अंडर रे दैट विल बी ए अल्फा डाइवर्सिटी। Which of the following statement is not correct? या भितर कोउटा तमरो ठीक आंसर नहीं। Classical smog occurs in a cool and humid climate. Okay, classical smog कौन? Classical smog को लंडन स्मॉग भी कहा जाउची और सल्फरस स्मॉग भी कहा जाउची। ओके देन तमरो कहूची कोन ना क्लासिकल स्मॉग इज आल्सो नोन एज लंडन स्मॉग। ओके तो ठीक अछि। लॉस एंजल्स स्मॉग occurs in the sunny and dry climate. Photochemical smog is reducing in nature. So तमर जो लैला कोन लॉस एंजल्स स्मॉग जहाँ फोटोकेमिकल स्मॉग से इते तमर कोन नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म होची देन वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर सहित मिसिकी प्लस सनलाइट रो प्रेजेंस रे तमर कोन गोटे ब्राउनिश एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होची ये कोन पेयर होची ठीक है सेटा कोन लॉस एंजल्स स्मॉग। तब से देखा गले तुम कौन होची ना कोटा तुम करेक्ट नुहे ना फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिड्यूसिंग इन नेचर एटा रिड्यूसिंग इन नेचर हबो नहीं ठीक अछि काहे कि ना फोटोकेमिकल स्मॉग ओजोन और पैन एटा कि होची कोन ना पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट और NO2 प्रेजेंट हुए एंड ओजोन टा तमरो कोन हुए ना ऑक्सीडाइज हेले ही प्रिपेयर हे परिबो सो रिड्यूसिंग इन नेचर that's a wrong answer. So the answer will be D. That is not correct. Then it is all are true about milk as a diet except what? It is low in iron content but rich in calcium, sodium and potassium. The major carbohydrate is lactose. The chief proteins are carcinogen and lactalbumin.
is rich in vitamin D but poor in riboflavin. Okay. तो फास्ट होची मिल्क रे दी प्रकार प्रोटीन थाए गोटे होची तुम कोन कैसेन एंड आउट होची तुम कोन ना वे प्रोटीन अंडर तुम भी कोन लैक्टो एल्बुमिन सेटा आसी जाउची ठीक है जोड़ा कि जनरल तुम कोन ना B12 ओके तो नीचे ऑप्शन कौन सब अच्छे फास्ट ठीक अच्छे देन मेजर कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज सेटा भी ठीक अच्छे तो चीप प्रोटीन कैसेन एंड लैक्टो एल्बुमिन ये भी ठीक अच्छे लास्ट किंतु इट इज रिच इन विटामिन डी एंड तुमरो कोन पुअर इन राइबोफ्लाविन एटा होची भूल ना तुमरो कोन राइबोफ्लाविन मिल्क रे बहुत अच्छे रिच इन राइबोफ्लाविन बट विटामिन डी नेचुरली नथा तो को आंसर हो तुम्हारा ना ए डी होची इनकरेक्ट तो द आंसर विल बी डी तुम्हारा नेचुरली राइबोफ्लाविन मिल जिवो मिल्क रो बट विटामिन डी रादर नथा है सेठी में तुम देखिथिबो सो जो एडवर्टाइज सब एनर्जी ड्रिंक बनबेटा हला हलिसला सब कहे कि मिल्क सहित एटा गोली के पीले कि कौन तार जो विटामिन डी अच्छे मिल्क रो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करी बाइंड करिवो एंड तार कैल्शियम टा एनर्जी ड्रिंक रो विटामिन डी एब्जॉर्ब करके हम बॉडी भीतर रिमार्केबल चेंजेस और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिवो जोटा कि सब फेक खाली चीनी और कलर चॉकलेट पाउडर कोकोआ पाउडर ये सब जिनिस अछि तो ताको बिल्कुल भी फॉलो करिवोनी तो खाली कांसेप्ट टा कहूचे कि विटामिन डी सेरे न थाए ओके नेचुरली न थाए The next question. Conversion of pyruvate to acetyl coenzyme is a multi-stage sequence of reactions which requires what? मन देखिथिबो एई जो रहिला कोन कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ना एई प्रोसेस को तमरो कोन गुआ होची ना पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन ओके जोड़ा कि कैटलाइज्ड होची कहा दला पाइरुवेट dehydrogenase complex. It is P, D and C. Okay. तो एथिरे कौन होची ना रिक्वायरमेंट कौन रोची ना 3 एंजाइम्स नियाती से प्रोसीजर टारे हबो रहिबो तो 3 एंजाइम कौन ना E1 हला जोटा कि होची पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज देन तमरा E2 होची कोन डाई हाइड्रोलाइपो amide acetyl transferase okay then तमरा E3 acetyl transferase जो डाइहाइड्रोलाइपोअमाइड से तमरा कोन हेजो ना इन्वॉल्व हे गला परे नेक्स्ट तुम जहा रहला से तमरा अनदर कोन एंजाइम रहबो ता सहित रहबो कोन ना 5 coenzymes PPP thymine pyrophosphate okay then another one is NAD plus nicotinamide adenine dinucleotide then FAD flavin adenine dinucleotide then coenzyme A then lipoic acid
it will be 1 and plus 2, then tomorrow con FAD 3, coenzyme 4, lipolysis 5. The delta enzyme 5 coenzyme. What is 3 major enzyme, 2 coenzyme, not 3 major enzyme, 5 coenzyme. So the answer will be B. The product formed in the first substrate level phosphorylation in glycolysis. Substrate level is the first आसला हमरो जो कौन ग्लूकोज जो ग्लिसरीन जो कौन ये डेल्टा यूनिट रिलीज होला पर जो सबस्ट्रेट लेवल आसी जो ब्रेक पॉइंट आसी सेठी तमरो कौन आसीबो फर्स्ट 1 3 बिस्फोस्फोग्लिसरॉल देन 3 बिस्फोस्फोग्लिसरॉल then 2 phosphoglycerate. So the three pachachi kona the product formed in the first substrate level phosphorylation glycolysis. The answer A 1 3 is phosphoglycerol. Then in human, RBC forms structure like piles of coins in capillaries called as what? Rollos. ସେତେବେଳେ ତମର କଣ ହୁଏ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ନା ସବୁ ଷ୍ଟାଫ ଭଳିଆ ଆରବିସି ବ୍ଲଡ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ ରହିଯାନ୍ତି ସେଇ ଫର୍ମକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ ଯେ ପାଇଲ ଭଳିଆ ନା ରୋଲୋଜ आंसर होगा सी QRST is related to with what এটা হচ্ছে কোন না depolarization of ventricle या माने कोन ना तो इलेक्ट्रिकल impulse spreads through the ventricles of the heart. तापर कौन हुए ना contraction हुए plumping of blood into heart and other organs. In ECG QRS होची कोन ना ventricular depolarization and T wave ventricular repolarization. Okay, so एठी आंसर होबो कोन C. Then 1 gram of hemoglobin when fully saturated will combine with what? The mane rakhibo will combine with 1.34 ml of oxygen. Answer hobo A. Which of the following is not secreted by kidney? Renin, calcitriol, EPO तीनटा जाक किडनी थ्रू रिलीज हुए बट तमर जोटा डोपामाइन से होच वन टाइप ऑफ हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर तो ये तुम्हारा ब्रेन में सीक्रेट हुए आंसर होगा डी वॉमिटिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन व्हाट देखिए मेडुला ओब्लंगाटा ହେଲା जे कि तुम्हारा कोन ना ब्रेनस्टॉर्म ना गोटे पार्ट ठीक है आंसर होगा सी An inhibitory neurotransmitter in the central nervous system is what? Epinephrine, then the norepinephrine, GABA and glutamate. So my answer होगा कौन? That होगा GABA. जी को तुम्हारा कौन ना main inhibitor.
in neurotransmitter system. In skin bronzing is characteristic of what? It is the characteristics of Addison's disease. Okay, ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା adrenal insufficiency କି release करे କ'ଣ increased amount of ACTH, that is adrenocorticotropic hormone. ठीक, से मेलानोसाइट को बढ़ाई दिए जहाँपर कि स्क्रीन कलर ब्रोंजिंग हो जाए अथवा डार्क कलर हो जाए. ठीक अच्छे, आंसर हम ए. बॉडी कैविटी डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसेल, जोटा कि तुम कौन एक्चुअल कौन सेलम और बॉडी कैविटी को कंसीडर कराई परिबनी. मोस्टली एटा कोड देखा जाए ना आस्कार रेस रे रहउचे सिडोसेल. तो आंसर हम डी. Then 97, Darlington proposed the most accepted theory of crossing over, that is what? That is breakage and reunion theory. Okay, तो या माने कौन ना क्रोमोसोम and breaks and rejoin, leading to recombination. Okay, then Bowman's capsule is lined by which type of epithelium? Squamous, columnar, cuboidal, stratified. That is cuboidal hoga answer. Also modified cuboidal. Layer na stratified tissues na columnar na squamous eta cuboidal structure re अछि. In which of the following years was the project Elephant launched by the government of India? Eta तुमको मने रखियार अछि. That is 1992. The answer will be 1992 रे project Elephant launch हेतला. काहेकि ना wild elephant and their habitat protection. Okay, then last question. The type of cleavage found in annelids, most mollusks and flatworm is what? That is spiral cleavage. Answer of B. Mostly annelid, mollusks and flatworm. एतरे कौन देखा जाए ना स्पाइरल क्लीवेज. एतरे सब किछि एमती खास बुझिबा को नै, एटा तुमको पूरा कंप्लीटली मन रखिया को अछि. ठीक अछि, तो आमे एथु जानि पले को टाइप रे सब क्वेश्चन आसुछ. एतरे हमर वेटेज सेमती कहार अधिकार होतला ना तुमर क्लासिफिकेशन रहउछि. देन तुमर डिफरेंट तुमर कोन रहउछि बॉडी सर्कुल सिस्टम सब जो प्रोसेस सिस्टम रहउछि इंटर बायोकेमिकल प्रोसेसेस, physiological processes. Okay, तो सत्य आमे भी स्ट्रेस देखी आपको डिस्कस करबा. तो आज में एतिकी. थैंक यू.